Good evening, viewers. This is your anchor Sonam. You're now watching HornbillTV. A dramatic turn of event has unfolded at Delhi's Jantar Mantar, where Ladakhi innovator and climate activist Sonam Wangchuk's prolonged hunger strike has taken a critical turn. The forced removal and hospitalization of activist Sonam Wangchuk from Jantar Mantar by the Delhi police has ignited a fierce constitutional debate. It exposes a deep legal fault line in Indian democracy. Can the state forcibly hospitalize a citizen who is voluntarily starving themselves for a cause? We dive into the legal tug of war between a citizen's right to dissent and the government's duty to protect life. The pre-dawn crackdown on Sonam Wangchuk's 21st day of fasting was swift, clinical and controversial. While the state points to the Delhi High Court's directive to protect the activist's life, legal experts are asking if this medical intervention oversteps the boundaries of personal liberty. Historically, hunger strikes have been a cornerstone of Indian civil resistance. Drawing directly from Mahatma Gandhi's philosophy of satyagraha, but where does the law stand today? But here is the real crisis tonight. A crisis that exposes a massive, blinding contradiction at the very heart of the Indian Constitution. On one hand, you have the shield of dissent. Under Articles 19(1)(a) and 19(1)(b), the law guarantees you the right to speak, the right to protest, the right to assemble peacefully. The Supreme Court has made it crystal clear. A peaceful hunger strike is not a crime. It is a legitimate democratic right. I repeat, it is a legitimate democratic right. But on the other hand, the state wields a different weapon entirely, the duty of care. Under Article 21, that guarantees the absolute right to life, and the courts interpret this through a powerful legal doctrine called parent patri, meaning quite literally that the state is the ultimate guardian of the citizens. Under this logic, the government cannot simply stand by and watch a citizen starve to death on public streets. To let them die is seen as a complete collapse of governance. And this is the constitutional deadlock as of now. Because when a citizen chooses to fast, where does the right to protest end and where does the state's right to force medical intervention begin? The legal tools used by police have dramatically shifted in recent years. Let's start with the date of Section 309. 4 decades, police arrested hunger strikers under Section 309 of the IPC for attempted suicide, famously done to force feed from Irom Sharmila via a nasal tube for 16 years. However, the Mental Health Care Act 2017 and the current BNS, Bharatiya Nyay Sanhita, effectively decriminalized standard suicide attempts by recognizing them as acts of severe stress. The 2024 Daliwal ruling. The Supreme Court in the Jagjit Singh Daliwal case established that while medical aid must be readily available to fasting leaders, the state cannot break the fast by force unless life is eminently slipping away. Coming to the Delhi High Court context, in Wangchuk's specific case, the High Court noted that the life of any citizen is precious. It mandated clinical monitoring but did not explicitly order force feeding nor a critical distinction that has family members and rights groups crying foul over the policy's aggressive execution. Founding president of the Cockroach Janta Party, Abhijit Dipke, has strongly condemned the Delhi police action, alleging that Sonam Wangchuk was forcibly taken away from Jantar Mantar early in the morning while on a 20-day hunger strike. He claimed Wangchuk was dragged away despite his frail condition and said supporters were initially unaware of his whereabouts. Dipke also alleged that he was assaulted by the police while heading to the protest site and accused the force of acting like RSS goons. Escalating the political attack, he said the protest demand has now shifted from seeking Union Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation to demanding Prime Minister Narendra Modi's resignation. में ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। हम
आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से इस बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस नहीं, आप चोर हो, आप गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो, आप चुपके से सर को लेकर गए हो, चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो आप। अरे बेशर्मो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी, थोड़ी तो इज्जत कर लेते इतने बड़े साइंटिस्ट की। घसीट कर लेकर गए, उन्हें गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें, और चादरों में छुपा कर लेकर गए हो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपा कर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर यह आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर, और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। कहाँ पर वो आओ, ये मेरे फोन भी छीन के ले गए, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने, और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गया हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, पूरे देश भर में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। Ultimately, this is no longer just a single protest site at Jantar Mantar. It is a profound test of constitutional balance. The state will always argue that preserving human life must supersede all else. Yet, civil rights advocates will counter that using medical intervention to dismantle a peaceful protest risk eroding the very core of democratic expression. As Sonam Wangchuk remains under medical observation, the courts face a delicate task, protecting a citizen's life without silencing their voice. Only time will tell where the legal precedent lands. But for tonight, the fragile line between the state protection and personal liberty remains deeply blurred. As we close this broadcast, two critical unanswered questions remain for our democracy. First, on constitutional rights,
Thus, the state's constitutional obligation to protect life under Article 21 gives it the legal authority to override an individual's fundamental right to bodily autonomy and peaceful dissent under Article 19, or is forced hospitalization being weaponized as a legal loophole to systematically dismantle peaceful protests? Second, on the demands of the protests, that's another question that remains. That's a wrap for this coverage, but we will be bringing more updates as the story develops further. Until then, stay informed.